Hello, am I audible and visible? Let me know. Whoever has joined. Aman Vishwakarma. Okay. So, welcome, Aman. Good evening. Let us wait for 5 minutes for others to join. Hello, Abhishek. Good evening. Ask everybody to join in time so that I complete by 7 o'clock. Is anyone else joining or shall I start the class? हेलो अनुज्ञा, हेलो अनुषा यादव. कोई और ज्वाइन कर रहा है तो बोलो जल्दी से ज्वाइन कर ले so that I start. I do not waste time. Okay, so we were talking about the specimens पढ़ रहे थे ना. So the first specimen which we talked about is, what is this? This was the specimen showing uterus with cervix and bilateral ovaries which had polycystic bilateral complex ovarian cyst. ठीक है, complex ovarian cyst था. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि how do you say whether it is benign or malignant. इसमें हमारे पॉइंट्स थे
मैलिग्नेंट के लिए इट इज साक्षी. ओके. The points for benign and malignant differentiation points were BAMMS, that is bilaterality, ये bilateral है. A से ascites, पेशेंट को ascites है कि नहीं, we have to ask in history. M से हो गया आपका मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस फीचर्स है कि नहीं. दूसरे M से था हमारा मल्टीलोक्युलरिटी, सो दीज आर मल्टीलोक्युलर सिस, तो मल्टीलोक्युलर है. एंड S से हो गया सॉलिड एरियाज, सो देयर दीज आर द सॉलिड एरियाज विच वेर प्रेजेंट. तो अगर जैसे ये इसमें इट इज बायलैटरल ऑल्सो, it is multilocular, it has solid areas, so it is most probably bilateral complex malignant cyst of the ovaries, malignant cyst of the ovaries. Okay, now the second जो हमने डिस्कस किया था, that is, wait a minute, इसको थोड़ा सा ब्रॉड स्क्रीन करा लेते हैं. So the second we had discussed this one. So this is the cut specimen of uterus along with cervix. The bilateral tubes and ovaries are not present. So age of the patient is obviously in the premenopausal age group. Age is more than 40 because hysterectomy हुआ है. And then this is a large world-like appearance. It is a submucosal fibroid of FIGO category 0 to 1. इसमें हमने पढ़ा था एज ऑफ द पेशेंट क्या है. एज ऑफ द पेशेंट विल बी between 40 to 50 years. She is premenopausal. What complaints patient might have come with? Patient might have come with the complaints of number one, this heavy menstrual bleeding. Then there might be complaints of your intermenstrual bleeding, dysmenorrhea, severe dysmenorrhea, that is pain during menses. Okay, so these are the symptoms. And how do you treat this patient? If patient is if the family is not complete, then we will go for hysteroscopic myomectomy, that is from inside. Hysteroscopically you will go inside and do myomectomy, cut this and bring it out. And if family is complete, we will go for total hysterectomy, which is done for this patient. Okay, so आज हम next आते हैं इसमें. What is this specimen? This specimen you will tell this is a cut specimen of uterus along with cervix. Okay, then bilateral tubes and ovaries are not there. Okay, Anand Prakash. Okay, so bilateral tubes and ovaries are not there. Then this specimen consists of a polypoidal mass, polypoidal growth-like mass in the endometrial cavity. Okay, now this endometrial cavity, this is a polypoidal mass, and it has necrotic areas also at the top. These are necrotic areas in the top. Okay, so this is probably a specimen of carcinoma endometrium, or it can be large endometrial polypoidal growth. Okay, so ऐसा अगर growth आता है, then your diagnosis will be most probably endometrial cancer, endometrial carcinoma. This is because इसमें देखो आपका ये जो growth है, ठीक है, this growth it can, अब देखो यहाँ पे what all DDs will be there, differential diagnosis क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले तो it can be an endometrial polyp, number one. Number two, it can be a submucosal fibroid, a large submucosal fibroid also. Then it can be, since it has necrotic areas, growth and necrotic areas, it is most probably a specimen with mitotic changes. ठीक है, growth हो सकता है, तो it is most probably cancer. So cancer of the endometrium. Now in this case, same thing. What is the age of the patient? Age of the patient must be advanced age. Okay, patient का age advanced होगा because carcinoma endometrium का peak age is around 60 years. 60 years के आसपास endometrial carcinoma होता है. Then they will ask you what is the presenting feature this patient might have presented with. So if this patient is at advanced age, if she has attained menopause, then her presenting feature will be postmenopausal bleeding.
and if she has not attained her menopause, then her presenting feature will be heavy menstrual bleeding with intermenstrual bleeding and dysmenorrhea. Okay. Now, if this mass grows below and it comes up to the cervix, then patient can have postcoital bleeding also. But since it has not come up to the cervix, so postcoital bleeding नहीं होगा. So at this stage, patient will have heavy menstrual bleeding, intermenstrual bleeding, dysmenorrhea, okay, and your postmenopausal. अगर पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है देन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. सो दीज आर द सिम्टम्स. नेक्स्ट, इसके साथ साथ अगर कार्सिनोमा है देन हमेशा याद रखना है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट एंड कैचेक्सिया. These all symptoms also occur if patient is having malignancy. So if this patient comes to you, what is your management plan? How do you manage the patient of carcinoma endometrium will be the next question. So first you will tell there are two investigations which we do for any patient of carcinoma endometrium. First of all, we will get an ultrasound done, and number two, we will go for an endometrial biopsy. Okay, an aspiration biopsy और endometrial biopsy, ये दो चीज करेंगे. तो हमारे जो अल्ट्रासाउंड है उसमें we can know the size of the mass and what is the thickness of the endometrium, that is the endometrial thickness. Okay. And in the biopsy, endometrial biopsy, we will know what type of cancer is it, whether it is cancer or not, सच में कैंसर है भी कि नहीं, और अगर कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है, what is the type of cancer, whether it is serous cancer, whether it is endometrioid cancer, whether it is mucinous cancer, any type, ठीक है, clear cell cancer, everything can be known in the endometrial biopsy. Now then they will ask you, how do you do an endometrial biopsy? So always remember, we do an office endometrial aspiration biopsy using People's curate. Okay, People's curate से करते हैं या फिर Webra's aspirator. These are the two devices which are used for endometrial biopsy. People in most of the hospitals, in OPD basis only, we do endometrial aspiration cytology. Okay, endometrial aspiration biopsy using People's curate. Okay. Next, what is the treatment of endometrial cancer? Endometrial cancer का treatment है staging surgery. Okay, staging laparotomy. So how do you do a staging laparotomy for a patient of endometrial cancer? उससे पहले you should know what is the staging. How do you do staging of endometrial cancer? Okay. So staging of endometrial cancer has come new last year, 2023 में FIGO staging has been revised. So I hope everybody will go through the revised staging, revised 2023 staging. Revised 2023 staging में क्या बोला गया है कि stage 1A is only confined to the endometrium, okay, with no myometrial spread. So if this is the condition, when there is only involvement of the endometrium with no myometrial spread, if there is no myometrial spread, then we can do only total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. But if there is myometrial spread of more than 50% of the myometrium, then we have to go for total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy plus post-operative radiotherapy has to be given. Okay, radiotherapy हम तब देंगे जब आधे से ज़्यादा मायोमेट्रियम में स्प्रेड कर जाएगा हमारा कैंसर. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड विल बी आस्क्ड टू यू. सी एंडोमेट्रियम का स्टेजिंग ज़रूर से पढ़ लेना, बिकॉज कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम का स्टेजिंग विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, so this is what is asked from this specimen. So what do you think is missing in this specimen? अगर वो पूछते हैं what is missing in this specimen, in this specimen bilateral tubes and ovaries are missing. Okay, क्योंकि अगर ये CA endometrium है then bilateral tubes and ovaries, that is bilateral salpingo-oophorectomy is necessary in all case of carcinoma endometrium, but this specimen is not showing it. Okay,
सो अगर स्पेसिमेन दिया जाता है, ये रियल स्पेसिमेन अगर आपको मिले तो आपको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा ट्यूब्स एंड ओवरीज है कि नहीं. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस स्पेसिमेन. When you get this specimen in examination, how do you say? This is a cut specimen of an ovarian cyst which contains hair-like material. This is hair-like material, okay, along with sebaceous material from inside the cyst, which is most probably a dermoid cyst. Okay, so this is a dermoid cyst, an ovarian cyst which is cut open, and from inside there is sebaceous material and hair like material coming out. So what is actually a dermoid? A dermoid is a teratoma, mature teratoma. Teratoma is a germ cell tumor of the ovary, germ cell tumor. Now ovary के tumors जो होते हैं उनको कैसे differentiate? They will ask you what is the classification of ovarian tumor. So ovarian tumor का classification में you have epithelial ovarian tumors, you have germ cell ovarian tumors, germ cell tumors, you have sex cord stromal tumors, and you have mixed type of tumors, other types of tumors. Okay, so out of the germ cell tumors, most common is a dermoid, which is a mature cystic teratoma. Okay, so most common tumor in the reproductive age group अगर कोई पूछे, ovarian tumor is a teratoma या फिर dermoid. It is a benign tumor, it is not malignant, but ये mature teratoma है. लेकिन अगर आप immature teratoma की बात करो तो immature teratoma is a malignant tumor. Okay, so dermoids में what do you need to go for salpingo-oophorectomy? पूरा ओवरी निकालना है कि नहीं? Your answer will be no. We will not go for salpingo-oophorectomy. In dermoid, cystectomy is the treatment of choice. मतलब जो dermoid cyst है उसी को हम निकालेंगे. Now dermoid का I did not understand what you wrote. Okay, in dermoid, सिस्टेक्टमी में आप पूछेंगे कि dermoid में साइज कितना होना चाहिए so that we go for cystectomy. Should we take out any size of dermoid? Classical teaching says that if dermoid का size is more than 5 centimeters, then you do cystectomy. Okay, cystectomy के लिए more than 5 centimeters का dermoid है, then हम operate करते हैं. Less than 5 centimeters, generally we do not go for cystectomy. Some people say that dermoid's size keeps increasing every year by around 1 centimeter. तो अगर आज मुझे किसी पेशेंट का 4 सेंटीमीटर डर्मॉइड मिलता है तो नेक्स्ट ईयर इट विल इंक्रीज टू 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट ईयर इट विल इंक्रीज टू 6 सेंटीमीटर. सो इट डर्मॉइड का साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो बेटर if it is a small size dermoid, then keep a patient on direct follow up, regular follow up, and when the size of the dermoid increases to more than 5 centimeter, you can go for unilateral cystectomy. Now dermoid में what is the most common complication? The most common complication is torsion. Okay, so dermoid वाला जो cyst होता है वो tort हो जाता है, ठीक है, घूम जाता है पेट के अंदर. Now what is the cause? Why torsion occurs? This is because dermoid के अंदर sebaceous material है, ठीक है. That is sebaceous material means fat like material is there inside the dermoid. So this fat makes it light, makes the dermoid light, and so it keeps floating inside the abdomen. Since it is floating, so there is chances of torsion of the dermoid. Okay. Next, this is the specimen. This is very commonly asked. What will you say? This specimen shows uterus along with cervix and bilateral tubes, but ovaries are not there, only bilateral tubes. So it is total hysterectomy and
bilateral salpingectomy specimen, but ovaries have not been removed. Now there is a diffuse swelling on the top, okay, which is probably an intramural fibroid, okay, probably FIGO category 2 to 5, between 2 to 5, okay, because it is intramural fibroid, okay. Now this fibroid is diffusely enlarged and it is covering almost entire of the fundal region of the uterus. Question वही आएगा, what is the age of the patient? Age of the patient is premenopausal and more than 40 years, more than 40 because hysterectomy हुआ है, प्रीमेनोपॉजल बिकॉज अभी तक हमने ओवरीज नहीं निकाला है. Then comes what is the complaint with which patient might have come. This patient might have come with heavy menstrual bleeding, okay, intermenstrual bleeding. There might be dysmenorrhea, severe dysmenorrhea or pain during menses, okay. There can be abdominal distension. Abdominal distension हो सकता है because of this large fibroid. There can be abdominal distension. There can be pain in the abdomen, okay. And since it is not malignancy, patient will not have any signs and symptoms like loss of appetite or loss of weight, okay. Then what will be the ideal treatment for this patient? If patient's family, answer will be if family is not complete, then we will go for medical management of fibroid. In medical management of fibroid, what are the drugs which are given? So one by one you have to tell the names of all the drugs. So read medical management of fibroid. क्या क्या drugs होते हैं? Start from oral contraceptive pills. You give progesterone pills are given. Then you have your mifepristone, which can be given for shrinking the size of the fibroid, or you can give GnRH analogs, that is gonadotrophin releasing hormone analogs are given. GnRH antagonists can also be given. Then you have mifepristone, which can be given. Antiprogesterone hormones can be given drugs. Then you have your Mirena, which is also sometimes can be inserted, but these have questionable role. Next, coming to surgical management is this. If you are answering very well, then you might also be asked what are the intervention radiology related treatments for fibroid. So MR HIFU, that is magnetic resonance MRI guided HIFU, high intensity focused ultrasound, is something which is used. That is MRI के guidance में आप high beam of ultrasound rays देके आप project करोगे into the fibroid, and these high intensity ultrasound waves will help to liquefy the fibroids. So liquefaction and dissolution of the fibroids are done under MRI guided HIFU, okay, high intensity focused ultrasound. What are the side effects of HIFU? You are asked in exam. So HIFU के side effects है, there will be pain, there will be post-operative fever, then you can have inflammation, you can have severe abdominal pain, there can be embolism, a little bit chance. These are few of the side effects, okay. And if patient दूसरा side effect ये है कि it is not fertility preserving. अगर एक बार आप HIFU कर लेते हो, उसके बाद patient can never go for pregnancy. So these are the side effects of HIFU. Next आपका this is a specimen. This specimen is showing uterus along with cervix and bilateral tubes and ovaries. The one side in one side the tube and ovary is normal, but in other side the ovary is containing a large uniloculated large solid cystic mass in the ovary, which is probably malignant, looking like malignant. So it is malignant ovarian tumor unilateral site, okay. अब मैलिग्नेंसी कैसे बोल रहे हो, उसके लिए फिर से आपका वही है BAMMS वाला रूल. B है बायलैटरलिटी, इसमें बायलैटरल नहीं है, ओके. नेक्स्ट आते हैं एसाइटिस. सो यू हैव टू आस्क द पेशेंट रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ एसाइटिस. M से है मेटास्टेसिस.
सो वेदर इट इज शोइंग साइंस ऑफ मेटास्टेसिस और कई भी ऑर्गन्स में है कि नहीं, दैट यू हैव टू रूल आउट बाय सीटी स्कैन. ओके. दूसरा एम से है मल्टीलॉक्युलरिटी. सो यू हैव टू टेक अ कट सेक्शन ऑफ द ओवेरियन मास and you have to look for whether there is your this multilocularity. And S से solid areas. So solid areas are present. ये जो आपका arrow है, it is showing towards a vascular area, more vascular and solid area. ये सारे आपके vascular and solid areas है. So solid areas जो है यहाँ पे, this arrow is showing towards solid and vascular area. And this vascular solid area with necrosis is suggestive of malignancy in this ovarian tumor. So this is an ovarian malignancy. Now what is the age of the patient? Age of the patient, क्योंकि hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy हुआ है, तो age of the patient is more than midlife. ठीक है, midlife से ऊपर ही है, around peri या postmenopausal age group की है. तो अगर पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप की है, देन व्हाट इज द लाइक टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर इन दिस? मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर इन दिस एज ग्रुप is epithelial ovarian cancer. So this is probably an epithelial ovarian cancer. epithelial इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आपका epithelium में there is altered vascularity and there are also vessels available with solid areas, so it is most probably an epithelial ovarian cancer. So what is the treatment of such patient? What are the signs and symptoms of such patient? Signs and symptoms will be, patient will present with abdominal distension, abdominal pain, bloating sensation, loss of weight, loss of appetite, and these are the symptoms. And if the patient is having, कल मैंने बताया था, granulosa cell tumor of ovary, then patient will also present with abnormal uterine bleeding और heavy menstrual bleeding के साथ भी present करेगी. Okay. So what is the treatment of choice? Treatment of choice is, first of all we will go for complete evaluation of the patient, that is starting from blood investigation, that is complete blood count, RFT, LFT, सारा इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, चेस्ट एक्सरे, ECG एंड एवरीथिंग, वायरल मार्कर्स विल बी डन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गो फॉर अ CECT, दैट इज contrast enhanced CT scan of abdomen and pelvis. CT scan of the abdomen and pelvis will let you know what is the extent of the disease. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, what is the role of CT scan? CT scan कराते हैं कि MRI कराते हैं? So always remember the investigation of choice for ovarian malignancy is CT scan, whereas the investigation of choice for carcinoma endometrium and carcinoma cervix is MRI, because MRI will tell about the soft tissue involvement. तो हमारा सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर में हमें देखना है कितना लोकल इन्वेजन है, कितना लोकली इन्वेड कर रहा है. वेयरएज इन ओवेरियन कैंसर वी हैव टू नो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, मतलब कहाँ तक ये स्प्रेड किया है, कितना बड़ा है हमारा ट्यूमर, वेदर देर इज मेटास्टेसिस इन द ओमेंटम, ओमेंटल स्प्रेड है कि नहीं, वेदर देर इज लिम्फ नोड मेटास्टेसिस. सो लिम्फ नोडल स्टेटस, omental metastasis, ascites and everything is better commented upon CT scan rather than MRI. So CT scan is the investigation of choice for carcinoma ovary. फिर हम क्या करेंगे, staging laparotomy करेंगे. Then they will ask you what are the steps of staging laparotomy. Okay, for PG students, remember what are the steps of staging laparotomy. So you have to tell vertical midline incision will be given from the umbilicus to below, and then you may extend it to above the umbilicus if needed. Then number 2, if you are given the incision, then abdomen is opened in layers and you go inside. First of all, what you will do is you will take peritoneal cytology of the patient. So cytology कैसे लेते हैं? If there is ascites present, then the ascitic fluid is taken for malignant cytology. If ascites is not present, then you have to
do the peritoneal washings. You wash the peritoneum, entire peritoneal cavity with normal saline, and the normal saline is then taken out and kept in a bowl to be sent for malignant cytology. When you send any specimen for malignant cytology, you have to put 1 cc 1 to 2 cc of heparin, because if for malignant cytology when you send, the cells, the malignant cells tend to clump. So to prevent clumping, you have to send it in heparinized solution. So you send the samples for malignant cytology. After you have taken the malignant cytology, then you have to do a thorough examination of the abdomen in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन. मतलब आइदर पेट के अंदर जाके क्लॉकवाइज हम करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज. ऑल द ऑर्गन्स हैव टू बी सीन. You can start from below. You palpate the uterus, bilateral tubes, ovaries, the pouch of Douglas. Coming to the right side, you can look at the right adnexa, then the your ascending colon, उसके बाद transverse colon, उसके बाद small intestines, then your descending colon, rectum, and then come again below उस side का adnexa, left side का adnexa, and then at the retroperitoneum. So in the retroperitoneum you can palpate for any enlarged lymph nodes. If there is enlarged lymph nodes, then you have to remove the lymph nodes also. So this is what has to be done. After that you do total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Then you go for omentectomy. Omentum in both infracolic as well as supracolic omentum has to be removed. If there is obvious cancer anywhere, then you have to remove. If there is no obvious cancer, you have to take biopsy from all segments of the peritoneum. पेरिटोनियम के सारे पार्ट से बायोप्सी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग. कहाँ से हम बायोप्सी लेते हैं? बेस ऑफ द ब्लैडर, देन पाउच ऑफ डगलस, देन बायलैटरल पैराकोलिक गटर्स, देन योर under surface of the diaphragm, then your retroperitoneum. Okay, these are the all the places, ठीक है, and the space of like all the spaces. Okay, from every space you have to take biopsy and you have to send, because biopsy will itself tell ki what is the spread of the disease. And after that you dissect the retroperitoneum, go behind and do lymph node dissection, bilateral retroperitoneal lymph node dissection. lymph node dissection में कौन कौन से lymph nodes निकालते हैं? Generally the pelvic lymph nodes. So pelvic lymph nodes में क्या क्या आ जाता है आपके? Bilateral, your internal iliac lymph nodes, external iliac group of lymph nodes, then आपके obturator lymph nodes and common iliac lymph nodes. These are the pelvic lymph nodes. Apart from pelvic lymph nodes, if it is possible, you can go up and do para-aortic group of lymph nodes also. What is the extent of para-aortic lymphadenectomy? It is up to the renal vessels. Renal vessels के ऊपर lymph node dissection नहीं करना है. In my one of the subsequent classes, along with diagram, along with pictures, I will again discuss the surgical staging के steps. उसमें आई सपोज आई विल मेक इट मोर एंड मोर क्लियर. आज मेरे पास अभी बोर्ड यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे उस दिन. आई विल ड्रॉ एंड आई विल लेट यू नो. सो स्टेजिंग लैप्रोटोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एंड आफ्टर योर सर्जरी you have to go for post-operative adjuvant chemotherapy for all patients of carcinoma ovary, except if it is stage 1A1 and 1A2. Except that you have to do you have to give adjuvant chemotherapy for all patients. Dr. Shiv, kindly repeat the biopsy site. See, biopsy हम सारे जगह से लेंगे, ठीक है. सो नीचे से स्टार्ट करो, पाउच ऑफ डगलस से लेंगे, ठीक है. देन योर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, सरफेस ऑफ द ब्लैडर से लेंगे. देन यू टेक बायोप्सी फ्रॉम द
जस्ट एडजेसेंट टू योर रेक्टम, ठीक है, मतलब बाउल के सरफेस के ऊपर से भी जहाँ पे पेरिटोनियम अटैच्ड है वहाँ से भी लेंगे। देन यू कम टू बायलैटरल पैराकोलिक गटर्स, ठीक है, पैराकोलिक गटर्स से लेंगे साइड से। देन रेट्रोपेरिटोनियम के ऊपर से जो पेरिटोनियल का कवरिंग है वहाँ से लेंगे, ठीक है। देन यू गो अबव and you take biopsy from the under surface of the diaphragm. Okay, good evening Vikas, good evening. Okay, so under surface of the diaphragm, and then you take biopsy from whatever suspected area. If there is any more suspected area जहाँ पे आपको लग रहा है कि biopsy can come positive, you can take biopsy from that place also. So these are the biopsy sites, standard biopsy sites जहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ द लिवर, सरफेस ऑफ द स्प्लीन के ऊपर से भी यू हैव टू पैल्पेट, यू नीड नॉट टू टेक बायोप्सी, यू हैव टू पैल्पेट। अगर पैल्पेशन में आपको लगता है कि कैंसरस लग रहा है, देर इज अनइवन सरफेस और देर इज सरफेस ग्रोथ, देन यू कैन ऑब्वियसली टेक बायोप्सी फ्रॉम दैट स्पेस ऑल्सो। ओके, लिम्फ नोड्स में इंपॉर्टेंट है, पेल्विक लिम्फ नोड्स में यू हैव एक्सटर्नल आइलिएक, इंटरनल आइलिएक, ऑब्चुरेटर एंड कॉमन आइलिएक, एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड्स अलग से ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, अप टू द लेवल ऑफ रीनल वेसल्स किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ डिसेक्शन ऑफ लिम्फ नोड, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ डिसेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स। सो अपर लेवल ऑफ डिसेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स इज अप टू द लेवल ऑफ रीनल वेसल्स, द लोअर लेवल ऑफ डिसेक्शन इज अप टू द लेवल ऑफ सर्कमफ्लेक्स आइलिएक वेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन एमसीक्यू विच इज आस्क्ड व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ डिसेक्शन इन एब्डोमिनल कार्सिनोमास। इट इज नॉट एक्सेप्ट फॉर सीए वल्वा, सीए वल्वा का तो हम नीचे तक चले जाते हैं डिसेक्ट करते करते, ठीक है, इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। अदरवाइज अगर एब्डोमिनल कोई कैंसर है तो उसका लोअर लिमिट ऑफ डिसेक्शन इज अप टू द लेवल ऑफ सर्कमफ्लेक्स आइलिएक वेन, उस लेवल तक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल इज शुड वी गो फॉर कंप्लीट लिम्फेडेनेक्टमी इन ऑल पेशेंट्स, ठीक है, सब में लिम्फ नोड डिसेक्शन करना है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ना देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, देयर हैज बीन स्टडीज, एंड स्टडीज नाउअडेज से दैट complete lymphadenectomy in all patients is associated with morbidity, ठीक है, morbidity है क्योंकि हम सारे lymph nodes को अगर निकाल देंगे, ठीक है। स्टेज 1 में भी क्या हमें lymphadenectomy करना चाहिए? तो आंसर है कि nowadays modern oncology says that you can go for sentinel lymph node biopsy. Sentinel lymph node biopsy is you inject dye एट द लेवल ऑफ, अगर मान लो ये ओवेरियन कैंसर है तो ओवरीज के आसपास हम पहले डाई इंजेक्ट कर देंगे। यू कैन आइदर इंजेक्ट मिथिलिन ब्लू डाई और यू कैन इंजेक्ट इंडोसाइनिन ग्रीन। बट ओवेरियन कैंसर में थोड़ा सा रोल कम है क्योंकि ओवेरियन कैंसर जनरली प्रेजेंट्स एट अ लेटर स्टेज, बट इन सर्वाइकल कैंसर एंड इन योर vulval cancer and endometrial cancer, there is high role of going for sentinel lymph node biopsy, whereby you inject preoperatively, you inject dye, and then intraoperatively you try to look for which lymph node has been become colored with the dye. So जो भी lymph node आपका dye uptake कर लेता है वो आपका सेंटिनल लिम्फ नोड है, एंड उसको पहले लिम्फेडेनेक्टमी करके उस लिम्फ नोड का बायोप्सी लेके भेजना होता है फॉर फ्रोजन बायोप्सी। इफ फ्रोजन में अगर वो पॉजिटिव आता है देन आप सारे लिम्फ नोड्स का डिसेक्शन करो। अगर फ्रोजन बायोप्सी में पॉजिटिव नहीं आता है आपका सेंटिनल लिम्फ नोड, देन नो नीड टू गो फॉर अदर लिम्फ नोड का डिसेक्शन। वन मोर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी पे आई विल टेक सेपरेट क्लासेस ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, पीजीज से तो पूछेंगे ही, ठीक है, पीजीज डीएनबीज यू हैव टू बी वेरी थरो विद इट, ठीक है। तो एक जो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द सेंटिनल लिम्फ नोड सेंटिनल लिम्फ नोड फॉर ईच ऑर्गन। सो रिमेंबर कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम का सेंटिनल लिम्फ नोड इज
your external iliac group of lymph nodes. कार्सिनोमा वल्वा का सेंटिनल lymph node is superficial inguinal group of lymph nodes. Superficial inguinal group of lymph nodes. ठीक है. नंबर 3 आता है कार्सिनोमा सर्विक्स. कार्सिनोमा सर्विक्स का is your obturator group of lymph nodes. Whereas in carcinoma ovary में there is no as such sentinel lymph node recorded. ठीक है. So sentinel lymph nodes क्या क्या है हर एक कैंसर का. डॉक्टर शिव रिपीट करो. सी एंडोमेट्रियम का इट इज एक्सटर्नल आइलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. कार्सिनोमा सर्विक्स का है इट इज ऑब्चुरेटर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. एंड कार्सिनोमा वल्वा का है सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? वी कैन मूव अहेड. Who are the persons logged in? I think सारे PGs ही है अभी logged in, क्योंकि attendance अभी तो कम ही है. Who are the PGs? Let me see. Hello, am I audible? समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को मतलब सुनाई दे रहा है कि नहीं? टेक्स्ट कर दो. सारे सो गए. ओके, अभिषेक इज देयर फ्रॉम यूजी. Somebody else is also there. Okay, chalo next. Now this is a hysterosalpingographic film. This is hysterosalpingography. ठीक है, HSG film showing पंकज राय. Okay, this is an HSG film. ठीक है, इसमें क्या बोलोगे? This is a hysterosalpingographic film or radiograph showing द लीच विल्किंसन कैनुला. लीच विल्किंसन कैनुला है यहाँ पे, along with the dye instilled into the uterine cavity. Now this dye is, what is the dye? Rhinographin dye. Okay, rhinographin dye is injected into the uterus, and this is the cervical canal and this is the uterine cavity. Okay. Now this uterine cavity is followed by bilateral fallopian tubes. This is one fallopian tube. This is another side fallopian tube जो पूरा नहीं दिख रहा है. ठीक है, with bilateral spillage. ठीक है, यहाँ पे spill है, यहाँ पे भी bilateral spill of the dye into the abdominal cavity, peritoneal cavity. So it means there is bilateral tubes are patent. Now what is abnormal in this HSG is this जो आपका फंडस है, फंडस ऑफ द यूट्रस, इसका फंडस का जो इंडेंटेशन है that is not there. This fundus has come down. Now this cavity is divided into two parts. This is one cavity of the uterus, this is another cavity of the uterus. So it is divided into two parts. Okay, two parts of this. Now what you will say, it can be either a bicornuate uterus or it can be a septate uterus. Either it can be bicornuate uterus or it can be septate uterus. Okay. Now how do you differentiate between bicornuate uterus and septate uterus? By a plain hysterosalpingogram, you cannot differentiate between septate uterus and bicornuate uterus. For that you have to do either an MRI कराना पड़ेगा, या फिर दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी. सो व्हाट डू यू डू इज यू डू हिस्ट्रोस्कोपी. नीचे से हम, ओके आई एम ऑडिबल. ओके, नीचे से वी कैन गो एंड सी हिस्ट्रोस्कोपिकली रिगार्डिंग द कैविटी, and ऊपर से laparoscopically we will come down and we will check for it. Okay,
सो अगर आप ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से यू सी, देन ओनली यू कैन से वेदर इट इज सेप्टेट यूट्रस, सेप्टम है कि ये बाइकॉर्नुएट है. अगर बाइकॉर्नुएट है देयर विल बी प्रॉपर 2 कैविटीज एंड फ्रॉम टॉप यू विल फाइंड कि ये पूरा यूट्रस तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है. बट अगर सेप्टेट यूट्रस है आपको ऊपर से एक यूट्रस मिलेगा, लेकिन अंदर से जब जाओगे आपको 2 कैविटीज मिलेंगे. सो इट इज द सेप्टम, द इंटरनल सेप्टम विच इज डिवाइडिंग बोथ द यूट्राइन कैविटीज. So that is why the investigation of choice is diagnostic hysteroscopy, laparoscopy. But the another diagnosis of choice, diagnostic modality of choice is also MRI. So MRI से भी पता कर सकते. Then the next question they will ask you is what are the symptoms with which patient might have presented. So septate uterus या फिर bicornuate uterus में patient presents with your रिकरेंट एबॉर्शन के साथ पेशेंट माइट प्रेजेंट, और पेशेंट माइट प्रेजेंट विथ इनफर्टिलिटी. आइदर इनफर्टिलिटी के साथ आ सकती है, और अगर इनफर्टिलिटी नहीं है तो पेशेंट माइट कम विथ रिकरेंट कंसेप्शन फॉलोड बाय रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. So what will you do? What is your treatment of choice? If it is a bicornuate uterus, nothing has to be done. Patient can go for direct conception. Patient can try for conception, and bicornuate uterus has a very good pregnancy outcome. Whereas if it is a septate uterus, then in septate uterus you have to go for septum resection. Septum resection कैसे करेंगे? नीचे से जाके करेंगे. So hysteroscopically you go inside and then with the help of a scissor or bipolar or monopolar cautery you can keep on cutting and coagulating the septum and doing a septal resection and then making it one large cavity. Apart from that, you can also see bilateral tubes are patent or not. Okay, so this is what will be asked in this specimen. Now coming to this specimen, what can you see over here? This is a cut specimen of the uterus and cervical canal with bilateral tubes and ovaries with a necrotic growth in the endometrial cavity which is showing signs of growth and there is necrosis. Most probably it is a case of carcinoma endometrium and probably stage 1 to 2. Okay, probably stage 1 because it is confined to the endometrium and also spreading to the myometrium. यहाँ पे myometrial spread है, so it is 1B. Okay, now exact staging will be possible only after proper MRI because MRI will let us know the soft tissue invasion कितना invade हुआ है. And apart from that, apart from MRI you can get CT scan also done if it is an advanced stage tumor, which will also tell you the lymph node metastasis, whether any lymph node is involved and what is the extent of the disease. So basically your investigation of choice will always be, अगर ये early stage का है then MRI is the investigation of choice because you have to know what is the myometrial spread. Myometrial spread पे depend करेगा कि हमें post operatively adjuvant radiotherapy देना है कि नहीं देना है. लेकिन अगर हमारा ऑलरेडी हमें लग रहा है कि पेशेंट एडवांस स्टेज में आया है, पेशेंट का ऑलरेडी और एंटायर सेरोजा तक इन्वॉल्व हो गया है, हमें लग रहा है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगा, देन यू हैव टू गो फॉर सीटी स्कैन बिकॉज इन दैट केस सीटी स्कैन विल बी द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस. सीटी स्कैन विल लेट अस नो द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, whether there is any lymph node involvement and whether there is any ascites, whether there is omental involvement, वो सारा चीज़ हमारा CT स्कैन बताएगा. MRI बताएगा हमारा कितना सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, एंड अर्ली स्टेज में MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. ओके, दिस इज अगेन अ हिस्टोसैल्पिंगोग्राफिक फिल्म शोइंग, इसमें बाइकॉर्नुएट यूट्रस लिखा हुआ है बट यू विल टेल लाइक दिस कि दिस इज अ हिस्टोसैल्पिंगोग्राफिक फिल्म showing the Leach-Wilkinson cannula
and the uterine cavity, cervix and the uterine cavity. The uterine cavity is divided into two parts, okay, and in one side there is spillage, free spillage available. In the other side there is no free spill of the dye available. This cavity is divided into two parts, so it can be, there can be 2DD, either it can be a bicornuate uterus or it can be a septate uterus. Now looking at the HSG, can you differentiate whether it is bicornuate या septate? अब देखो ये भी एक है, ये भी एक है, बता सकते हो क्या? तो उसमें आपको दो पॉइंट्स हैं. You will say कि depending upon the योर इंटरकॉर्नुअल डिस्टेंस, ये आपका एक कॉर्नुआ है, दूसरा ये आपका एक कॉर्नुआ है. योर इंटरकॉर्नुअल डिस्टेंस इफ इट इज मोर देन 6 सेंटीमीटर, 6 to 7 centimeters, then there is more chances of bicornuate uterus rather than septate uterus. Number one. Number two, the angle between the two uterine cavities, this angle, if this angle is acute, अगर ये acute angle है, then we will say more chances of septate uterus, whereas if it is obtuse, अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है हमारा uterus, obtuse angle है, then we will say कि more chances of bicornuate uterus. ठीक है, so this is most probably, this is obtuse and the intercornual distance is also more than 6 centimeter, so more chances of bicornuate uterus, more chances बोलेंगे, क्योंकि HSG के बेसिस पे we cannot say with 100% श्योर कि पेशेंट को बाइकॉर्नुएट है कि सेप्टेट है. ओके, हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं. तो डायग्नोस्टिक मोडालिटी ऑफ चॉइस क्या होगा? आइदर MRI एंड सेकेंडली डायरेक्टली गो फॉर डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी. ठीक है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस में वेरी गुड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम, whereas in septate uterus it has poor prognosis. क्यों? Because if the implantation occurs in the septum, then septum is a very thin area, it will not help to provide proper blood supply to the baby and there will be recurrent abortions. Now this is a specimen showing uterus, bilateral fallopian tubes and ovaries along with the cervix, and there is a growth in the cervix. ठीक है, and along with the cervix this specimen also has the parametrium which has been dissected out. This is the parametrium which has been dissected out. So this is a specimen of radical hysterectomy, that is. गुड इवनिंग, कौन है? नाम नहीं आ रहा है. गुड इवनिंग, somebody said good evening. You can text your name also, it's not visible. ठीक है, सो दिस इज अ रेडिकल हिस्टेरेक्टमी और वर्डाइम्स हिस्टेरेक्टमी. वर्डाइम्स हिस्टेरेक्टमी, ममता. ओके ममता, गुड इवनिंग. सो वर्डाइम्स हिस्टेरेक्टमी या फिर रेडिकल हिस्टेरेक्टमी स्पेसिमेन. नाउ दे विल आस्क यू रेडिकल हिस्टेरेक्टमी किया क्यों है? दिस इज बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स. कार्सिनोमा सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर. तो ये ए वाला जो पार्ट है, दिस इज सर्वाइकल कैंसर. Because it is a cervical cancer and it is operable, means it is up to stage 2A. It is stage 2A या stage 1B. 1B तक है ये. ठीक है, so that is why सर इन हिंदी प्लीज. अच्छा, तो ये एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर का स्पेसिमेन है. सर्वाइकल कैंसर का स्पेसिमेन है, इसीलिए इसमें वर्डाइम्स हिस्टेरेक्टमी या रेडिकल हिस्टेरेक्टमी किया गया है. रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में हम क्या क्या चीज़ निकालते हैं? रेडिकल हिस्टेरेक्टमी इज एक्चुअली टाइप 3 हिस्टेरेक्टमी. ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं? यूट्रस, बायलैटरल ट्यूब्स एंड ओवरीज तो निकालते हैं, साथ ही साथ में हम पैरामेट्रियम निकालते हैं. पैरामेट्रियम में क्या क्या निकालते हैं? यू विल डिसेक्ट द यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स अप टू फ्रॉम इट्स ओरिजिन. रेडिकल की बात कर रहे हैं. Uterosacral ligaments from its origin, then bilateral Mackenrod's ligaments from its origin, then uterine artery is dissected from at the level of the crossing over with the ureter.
ठीक है, यूरेटर का जहाँ पे क्रॉस करता है उसके मीडियली पूरा निकालते हैं, ठीक है. एंड देन योर अपर पार्ट ऑफ द अपर 2 centimeters to 2 to 3 centimeters of your vagina. So these are the things. ये upper 2 to 3 centimeter of vagina. This is your, ये देखो uterine artery from its origin, ठीक है, या फिर at the medial of the crossing over with the ureter. Then these are the bilateral uterosacral ligaments and Mackenrod's ligaments which have been dissected out. So this is radical hysterectomy specimen. Now radical hysterectomy कौन से स्टेज तक किया जाता है? सी ए सर्विक्स के स्टेजिंग अच्छे से पढ़ लेना. एवरी ईयर इट इज बीइंग आस्क्ड इन सम फॉर्म और द अदर, ठीक है. अगर थ्योरी में नहीं पूछा जाए तो प्रैक्टिकल में तो जरूर पूछ लेते हैं. So these will be asked. Always remember stage 2B is parametrial involvement. 2B से ऊपर हम सर्जरी नहीं करते हैं. 2B या उससे ऊपर है या फिर स्टेज 2A2 या फिर 1B3 अगर है तो हम जनरली सर्जरी नहीं करते हैं. वी गो फॉर डायरेक्ट कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी. लेकिन अगर स्टेज 2A1 तक है या फिर 1B2 तक है, इससे नीचे है, वी गो फॉर सर्जिकल रिमूवल. सो इसमें सर्जिकल रिमूवल हुआ है एंड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी हुआ है. पीसीओडी के बारे में कुछ बताइए. पीसीओडी का तो स्पेसिमेन है नहीं. वेट, आई विल टेल अबाउट पीसीओडी. थोड़ा सा रुक जाओ, स्पेसिमेन सारे कंप्लीट कर लेते हैं. ये ऑब्स्टेट्रिक स्पेसिमेन है. ऑब्स्टेट्रिक स्पेसिमेन हम कल पढ़ लेंगे. दिस इज अ लैप्रोस्कोपिक पिक्चर शोइंग एडनेक्सल एक्टोपिक, ठीक है, एक्टोपिक, वायबल एक्टोपिक, अनरप्चर्ड एक्टोपिक ऑफ द राइट फेलोपियन ट्यूब. ओके, राइट फेलोपियन ट्यूब. एंड दिस इज अ ग्रास्पर से पकड़ के हम जनरली व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर सैल्पिंजेक्टमी ऑफ द पेशेंट. यूनिलैटरल सैल्पिंजेक्टमी इज डन. इफ फैमिली इज कंप्लीट और नॉट कंप्लीट इस पे डिपेंड नहीं करता है. सैल्पिंजेक्टमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. लेकिन अगर एक ट्यूब ऑलरेडी निकला हुआ है और दूसरा ट्यूब में है एंड फैमिली इज नॉट कंप्लीट, देन वी कैन गो फॉर सैल्पिंगोटमी या सैल्पिंगोस्टमी वेयर वी salvage the tube. But it should be remembered that after salpingotomy or salpingostomy, chances of recurrence of ectopic is very much more. This is the bilobed placenta and this is your complete mole. This is triamniotic trichorionic placenta. This is hydrops fetus. This is raised nuchal translucency. ये सारे हम कल पढ़ लेंगे. anencephaly. हाँ, ये this is a large posterior wall intramural fibroid. Okay, probably FIGO stage 3 to 4, 3 to 4 के आसपास या 3 to 5 बोल सकते हो, ठीक है. And what is the symptoms of this patient? Apart from heavy menstrual bleeding and intermenstrual bleeding and dysmenorrhea, this patient will also have pressure symptoms. Posteriorly है तो pressure symptom upon the bowel, patient will have constipation and patient will also have distension of the abdomen. This specimen is showing multiple uterine fibroids, whorl-like appearance of various FIGO classifications. This is probably FIGO 6 to 7. This is also 6 to 7. This is stage 4 to 5. This is also 5 to 6. Then these are also your things, your fibroids of FIGO stage 3 to 4. So multiple fibroids are there. So in this patient, hysterectomy has been done. What is the age of the patient? Age is more than 40 years but less than 50 years because ovaries and tubes have not been removed. And this patient will also present with all the heavy menstrual bleeding के symptoms. उसके साथ साथ patient को pressure symptoms भी होगा because of these fibroids. So this is all about your specimens. हाँ, somebody was asking, tell me about the PCOD. PCOS में remember your main pathology is polycystic ovaries. Polycystic ovaries occur because there is hormonal imbalance in the body. Hormonal imbalance
leads to more of androgenic hormones in the body, whereby it overpowers your estrogen. So estrogen in the body is reduced, and there is more of male hormone, that is androgenic hormone, because there is more of LH, luteinizing hormone, compared to FSH. LH FSH ratio is more than 3. So because of these androgenic hormones, there is recruitment of follicles in the ovaries, but the ovaries follicles do not rupture. Follicles अगर rupture नहीं होंगे excuse me, follicles rupture नहीं होंगे, then there will not be ovulation. So there will be anovulatory cycles. Anovulatory होंगे तो there will not be corpus luteum cyst formation, and there will not be progesterone release. तो there will be persistent estrogen. Estrogen high रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं रहेगा बॉडी में. ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम थिक होता रहेगा, and after a certain time endometrium will keep shedding and there will be heavy bleeding. So patient will have bleeding after a long time. ओलिगोमेनोरिया हो जाएगा, 2-3 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम थिक होता जा रहा है. फिर अचानक से एक दिन ब्लीडिंग हो जाएगा जब एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाएगा, and patient will have lots of bleeding, heavy menstrual bleeding, followed by 3 to 4 months of gap. ऐसे करके ओलिगोमेनोरिया होगा. Now what is the treatment of choice for PCOS patients? First of all, you have to go for lifestyle modification. In lifestyle modification, you have to go for weight reduction and avoid spicy junk food, and at the same time you have to go for exercise. So this reducing your BMI will help in balancing your estrogen and progesterone, thereby decreasing androgenic hormones and thereby helping you to ovulate. Ovulation होगा, ठीक है. अगर उससे भी नहीं होता है, then externally we give the patients oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills will help to regulate estrogen progesterone balance, thereby helping in ovulation. So this is what is the pathophysiology of PCOS. In PCOS, apart from anovulation या फिर irregular bleeding, menstrual bleeding, you also have acne and hirsutism. Acne and hirsutism are signs of hyperandrogenism. Okay, so I hope it is clear. So let us stop the class today here. 7 o'clock already हो गया है. Rest of it will continue tomorrow. Now why the attendance is so low? Fall white क्यों ली जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए. Folic acid is not taken in PCOS. Folic acid is given if patient is wanting to conceive. Okay, conceive करने से पहले patient is prescribed folic acid, क्योंकि conception में आपका जो neural tube defects होता है, neural tube defects को prevent करता है folic acid, that is vitamin B9. Okay, sorry, B7 is folic acid, B9 is biotin. Okay, so B7 से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट होता है. तो इसलिए जब प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसी समय फोलिक एसिड लेते हैं. गुड इवनिंग शैलजा, गुड इवनिंग. फोलिक एसिड लेते हैं टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. फोलिक एसिड एज सच इज नॉट टेकन इन PCOS पेशेंट्स. ओके, एनी मोर डाउट? एनीबडी हैज एनी मोर डाउट? यू कैन आस्क क्वेश्चंस. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. डॉक्टर शिव, समझ में आ गया आपको सब कुछ? एनी डाउट? एनी मोर PGs? नो PGs आर इंटरेस्टेड इन क्लास, आई थिंक. थैंक यू, थैंक यू. पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू अटेंड क्लास, एंड दिस इज वेरी पैथेटिक. So we can then call off the day for today. Thank you everybody for attending the class, and I will send the link भेज दूंगा मैं. लिंक से आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो बाद में जब आप फ्री हो जाओगे. I will hope everybody sees the class because it is very important to sit
revise before your Viva examinations. All the best. Good evening, good night, and happy study, happy learning classes. Namaskar.